Assalamualaikum everyone and welcome back. I wonder why it's called AutoCAD when it cannot CAD automatically. I guess I'll always be wondering. This is your host Architect Shariar and you are watching me on a brand new episode of Let's Talk Architecture. So, जब हम लोग अपने एकेडमिक ईयर्स में होते हैं आर्किटेक्चर के, हम लोगों के एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हम लोगों के एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ हमें होता है कि हमने ग्रेजुएट करके हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े ऑफिस में काम करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे. बट एज सून एज वी ग्रेजुएट एंड एंटर द मार्केट, कुछ होता है कि हमारे एम्बिशंस, हमारे मोरल्स बहुत बुरे तरीके से गिर जाते हैं. क्या ट्रांजिशन बहुत हार्ड है? क्या हमारी मार्केट बहुत ख़राब है? क्या सीनियर आर्किटेक्ट्स जगह नहीं देते जूनियर्स को? क्या सैलरी पैकेजेस बहुत लो हैं? क्या ऑफिस एनवायरनमेंट्स बहुत टॉक्सिक और ख़राब हैं? वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपनी वर्क लाइफ और अपनी घरेलू ज़िंदगी को हम बैलेंस आउट नहीं कर सकते? ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने आज के एपिसोड में, जिसका नाम है the work-life balance. For that very purpose, we have on our show someone who's not only an architect, but she's also an entrepreneur, a businesswoman, a wife, a mother, a teacher. We welcome none other than architect Neha Faruqi. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for having me over. Welcome. कैसी है नेहा? I'm good. How are you? Good. Thank you. आपने इतना टाइम निकाला अपना. No worries at all. And all the way up here. नहीं. आज स्कूल शुरू हो गया ना बच्चों के. Exactly. सुबह छोड़ के 9 o'clock अपने बेटे को we आज 20 minutes earlier छोड़ा है. So that I'm here at 9:45. Yes. Right. So let's just dig into the episode without wasting any time. Neha. So अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, अपनी आर्किटेक्चर जर्नी जो भी अभी तक है उसके बारे में. Okay. So basically I am architect Neha and I did my architecture from NCA in 2018. My entire education has been from root school system. I'm a complete Pindiite and Islamabadi, half and half. And I went to ComSats क्योंकि आपको पता है ना उनका सेशन पहले शुरू हो जाता है. So I went to ComSats पहले. I did a couple of months there. In the meantime, I applied to NCA. Then I got in, so I joined NCA for architecture. So 5 years were great, amazing. I had great teachers. NCA was a lot of fun. I had amazing friends. And during that time, I did a couple of internships. One of my major internship was at Norman Foster Hearst Tower in New York. Nice. And it was a like a jaw-dropping experience. क्योंकि आप अभी तक NCA में हो, आप पिंडी में रह रहे हो, आप अपने local architectural firms को देख रहे हो, and then और एकदम से you go to basically a concrete jungle which is completely built by architects, right? And I got to intern with them for 2.5 months. So it was great. It was a lot of experience. And then I interned with Marvi Mazhar in Karachi. She's basically a heritage conservationist. So with her, we went towards the entire Sakhar site and we got to know कि अगर heritage or history को conserve करना है, architectural pieces को, how are you able to do that? So that was also a good experience. It was a month-long internship. And then, 5 सालों में a couple of internships with local architects in Islamabad, Pindi. So that gives you a really good experience कि what are you going to enter in? And when I was in my thesis year, so just after thesis year, first term, summer break, and then second term. So I got married in between. Oh. Yeah. So my aspects हो गए. Yes. और मैंने August में शादी कर ली. Okay. और उसके बाद September onwards, like thesis शुरू करा दी गई. कर ली. अच्छा कर ली. अरेंज शादी थी but कर ली. Okay, ठीक है. So my father was not in favor of it. He always wanted कि खत्म करो और फिर करना. उनको लगता था शायद बीच में ना रह जाए. Like women pressure जो हो रह जाता है. But nahi, but my husband was in Lahore. So literally मेरे last 4 months thesis के जो crucial time होता है, that was spent between Lahore, Pindi. Like there were times my friends were used to be like, what are you doing? और मैं कभी लाहौर से flight ले रही हूँ और आ रही हूँ जूरी देने के लिए, पिंडी से flight ले रही हूँ, because sometimes आपका time cut करने के लिए, yeah. So tough time, but alhamdulillah, thesis ho gaya. I did well. Yes, there was a recyclable metropolis city. Like the entire Pindi was getting cleaned by a module system, and everything was being collected in a place. Rawat ki site pe meri site thi, and it was a huge trash metropolis kind of a space jahan pe students could also come witness recycle kaise hoti hai, museums, like a big thing. So manage ho gaya, alhamdulillah. It was good. Then after my thesis,
as I mentioned, my husband was in Lahore, so I moved to Lahore. Okay. और लाहौर बंदा जाता है तो वो कहते हैं अच्छा यहाँ तो कामल खान मुमताज भी हैं, यहाँ तो नैयर अली दादा भी हैं, so let's just apply everywhere. रईस फहीम, मैंने इन 3 चीज़ों को कर दिया. And when I started getting, I got 2 calls. That's when I figured out कि I am expecting my first child. Okay. So I was like, अच्छा अब क्या होगा? So I took a break. I took a break for 3 to 4 months, and then I joined this Aurum Home Interiors in May 2018. Right. So when I joined that, उसमें ये था कि it was an interior firm and they were producing furniture pieces, and we used to do architectural designing for smaller studios like designers or niche cafes. So उसमें ये अच्छी बात थी कि Aurum was only targeting high-end clients, Right. in Lahore, Faisalabad and Karachi. The good thing working with them was कि the clients were always ready to experiment. Because they were throwing in money, they wanted different from the other person. So उसमें learning बहुत ज़्यादा थी. We were given the freedom to explore. उनको basics नहीं चाहिए थे, उनको out of the box चीज़ें चाहिए थी. So it really helped in my growth. क्योंकि जहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जैसे constraint आ जाता है, so आपकी थोड़ी learning limited हो जाती है. So it was really good in terms of that. But after 3 years, I moved back to Pindi Sava. And when I moved back, I realized that by then I have 2 babies. Okay. So by that time you realize कि अच्छा 2 बच्चों के साथ 9 to 5 तो नहीं manage होगा. पहले तो चलो I was doing 9 to 5. I used to take my daughter along, but नहीं होगा. So that's when I started my own practice. It's named as Studio II. Right. And I have another partner, Hassan Agha. He's also an architect from Comsat, and we both are running it. And alhamdulillah, it's going good so far. That's nice. Yes, and with this, I have a small business named as Aisle Couture. Like I'm designing clothes, but it's based on. It's basically a thing that I wanted to do for my kids. It's Aisle, initials of my both kids. Okay. And I just started it for them. That's sweet. And I started teaching last year. It's been a year now at NCA. And I've been taking 2nd year studio and 4th year architecture seminars. Wow. So yeah. Long journey. मैं तो नॉर्मन फॉस्टर भी रुक जाता हूँ. वो भी आप नॉर्मन फॉस्टर जब करो ना तो फिर उसके बाद होता है अच्छा ये न्यूयॉर्क है, मैंने वापस यहाँ जाना है, बट फिर शादी हो गई and then फिर Right. I had to stay here. It's very unfortunate कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जितनी भी फीमेल आर्किटेक्ट्स हैं ड्यूरिंग द डिग्री काफ़ी ज़्यादा जो रेशियो जो मैंने देखा है सीनियर्स का भी जूनियर्स लड़के कम होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आके लड़के ज़्यादा हो जाते हैं, लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं. व्हाट वाज योर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड कीपिंग इट गोइंग? Okay, so my driving force was that since like I was a child, I've always had a stronger personality. Like मेरी nerve strong है and I want to become something. I want to have my own name. I love fame, I'll be honest. Like, I want Kicha by the time I'm 45. So everyone knows Kicha ye koi hai. When my daughter goes to school, so people can tell Kicha, oh, that's your mother. So that really becomes a driving force. Your passion and your love for what you're doing. You have to go back to the roots. You have to realize Kicha maine architecture kyun kiya tha. That's when you pick up your motivation back. And then, secondly, I think for women, अब time बदल गया. When you look at in your surroundings, अगर मैं अपने कोई in-laws के भी friends में चली जाऊँ, so मैं देखती हूँ कि जो सबके बहुएं are working, parents के friends के बच्चे देख लूँ, so most of them are working. I see my husband की friends की wives, I think they all are working. So now I think times are little like they're changing. I think it's the need of the hour too. बिकॉज एक पहले तो था कि चले एक ही ब्रेड रनर था आपकी फैमिली का, अब कर नहीं सकते, दोनों काम करेंगे बिकॉज स्कूल की फीसेस हैं, ट्रैवलिंग है, बिल्स हैं, चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं, दोनों. एंड आई थिंक आपके लिए अपने लिए भी बहुत जरूरी है कि इफ यू आर इनटू समथिंग यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग. इतना आर्किटेक्चरल चीजें आगे जाती जा रही हैं, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि आपको पता हो कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस तरह बाहर निकल सकती हूँ, मैं ये चीज़ अचीव कर सकती हूँ. इफ़ माई फेलो मेल स्टूडेंट और मेल फ्रेंड और माई पार्टनर इन माई फर्म, इफ ही इज़ एबल टू डू दिस, देन व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू दिस?
So I think self-confidence and self-care also plays a major role in being motivated. It's important. हाँ, काम करते रहना चाहिए, स्पेशली आजकल के सोशल मीडिया वाले दौर में जहाँ देख के बंदे को डिप्रेशन काम करना थोड़ा आसान भी हो गया है. You know, पहले शायद हमारे मदर्स के टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था. हम लोगों को इतना एक्सपोजर मिल गया कि हम घर बैठे भी अपनी एक इंस्टाग्राम ऐप से we can get hold of interior projects or you know there's so much to do. It's easy now, right? कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद बच्चों के साथ साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है. कुछ लोग कहते हैं नहीं, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, हमें तो कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं है. आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती हैं? लाइक अब आपका होल्ड हो चुका है चीज़ों के ऊपर और यू स्टिल लर्निंग इट? पहले आप मुझे बताएं ये कौन कहते हैं कि इट्स पीस ऑफ केक? I want to know this because this is the नहीं, मेरी फैमिली में कुछ है. हाँ, there are some female figures in my family who are working there, like कोई मसला नहीं. कुछ चेंज ही नहीं हुआ. अच्छा, your later question was कि yes, I've gotten hold of it, but I think work life, married life, kids मैनेज करना it is exhausting, but आपके support system पे बहुत matter करता है. My husband is very hands on with the kids and he's supportive. Like he doesn't want his wife to sit at home. He thinks कि अगर मैंने 5 साल के लिए architecture पढ़ा है, so I should go out and explore my opportunities. That's nice. Plus my mother-in-law is like a mother to my kids. She completely takes care of my kids. If she's not around, then my parents and siblings are there. So my like support system is very strong. And I think आपको हर चीज अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए. आपको delegate और outsource करना पड़ता है. You know, when you have kids, business भी आपको grow करता है. मैंने अकेले भी रह के काम किया. When I was in Lahore, it was just me and my husband, and I had 2 babies. But I had a help. I had a nanny for the kids जो मेरे साथ ऑफिस ले जाती थी. ऑफिस में I used to obviously keep my daughter around. लेकिन आपको हेल्प और आउटसोर्स के बगैर I can't say that I can do everything खुद से. आप हर चीज नहीं खुद नहीं कर सकते. So I think it depends a lot on person to person. किसी का support system आपको इजाजत देता है, किसी का support system इतना stronger नहीं होता. But then having said, जो लोग बाहर रह रहे हैं, who are studying, who are working, who are managing the house themselves, because you don't get these facilities abroad. It's only in Pakistan. It's very expensive. But you see it that they're managing also. So it drives you, it motivates you कि अच्छा, you know, हो सकता है. हो सकता है. वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी. And I believe women especially कुछ भी कर सकती हैं. Trust me. That's true. हमारे यहाँ जब भी जो सबसे मुश्किल टास्क होता है आर्किटेक्चर का, वो है डीलिंग विद वेंडर्स, क्लाइंट्स, पीपल ऑन साइट. अनफॉर्चुनेटली जब फीमेल आर्किटेक्ट्स होती हैं तो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है. एंड एक तरह से देखा जाए तो ये अनफेयर भी है. तो आप इस तरह के मुश्किल लोगों को किस तरह से डील करती हैं फील्ड में? अच्छा, सो ये आपकी इस बात से याद आया, जब मैंने नया काम शुरू किया और मैं फील्ड में गई तो किसी ने कोई बोला 2 सूत्र और मैंने उनसे पूछा ये क्या होता है. सो उस दिन के बाद से उस ठेकेदार के दिमाग में बैठ के इनको कुछ नहीं आता, वो मुझसे बात ही ना करे. एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है. देन आई हैड टू कीप अ पर्सन अलाइंड. एक लेमैन को मैंने लिया. मैंने कहा आप मुझे 2-3 हफ्ते दिए और आप मुझे सारी टर्मिनोलॉजी सिखाएं. आई हैड टू गेट असर्टिव ट्रेनिंग डन. आई हैड टू नो द बेसिक्स, बिकॉज उसके बगैर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनको लगता है इनको कुछ नहीं आता. और ये वो चीज़ है ना जो हमें यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाते हैं या तो उस तरीके से नहीं सिखाई जाती. नहीं, आई डोंट थिंक दिस कैन बी रियली टॉट इन द यूनिवर्सिटी बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद one-on-one clients or one-on-one labor, right? Site vocabulary होनी चाहिए डेफिनेटली, और हर कंट्री के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. आई थिंक हमें सारी हिस्टोरिकल टर्म्स आती हैं बिकॉज हम हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, हम सारी इंग्लिश टर्म्स आती हैं. बट व्हेन यू कम टू लाइक दिस देसी टर्म्स जो कि यहाँ पे ज़्यादातर साइट पे यूज होती हैं, वी आर जीरो इन दैट. सो आई हैड टू टेक 2 to 3 weeks टू लर्न दैट. और अभी भी समटाइम्स आई डू फेस कि मैं किसी को फ़ोन करती रहूँगी, वो सीरियसली नहीं लेगा. देन आई हैड टू कॉल माई मेल पार्टनर एंड ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट दैम. सो यू आर राइट, पाकिस्तान में अभी भी जरूरत पड़ती है कि यू नो माय मेल पार्टनर हैज टू इंटरवीन एंड हैंडल अ फ्यू मैटर्स बिकॉज दे थिंक कि ये औरत है, इसको खैर है, छोड़ दो. लेकिन बहुत जगहों पे बेहतर भी है. इफ यू गो टू बाय टाइल्स, इफ यू गो टू बाय अ लॉट ऑफ इंटीरियर थिंग्स, सो दे विल प्रायोरिटाइज वुमेन. They're going to prioritize me over him. Tiles में मसला आ गया, change कराना है, I'm going to give them one call and they're going to listen. So I think it just depends. It depends a lot, and you have to be very firm. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि और रिस्पेक्ट के साथ आप अगले बंदे को अपनी बात मनवाओ. यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव बट यू हैव टू बी अ लिटिल फर्म. अगर आप उनके सामने ऐसे रहते हैं डरा सा है, फिर वो आपके हाँ बिल्कुल. अब मैं कह रही हूँ लाइन टेढ़ी जा रही है, आपने टाइल थी ठीक है अजी ठीक है,
आपको सही नजर नहीं आ रहा, फिर आप कहते हो कि अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल फ्रंट। ऐसे है। यूनिवर्सिटी लाइफ है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो जो ट्रांजिशन होता है वो एक बहुत सडन होता है, राइट? और हम जो है ना, हमें कुछ नहीं पता होता एकदम से कि क्या हुआ है हमारे साथ। हम तो बड़ा चिल कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन जॉब भी है, घर भी है एंड ऑल दैट। तो हमें हमारे इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ के लिए या नहीं करते, या उनको करना चाहिए? Shreya, this is a very debatable thing. You know, जैसे मैं जब तक NCA में थी, my tenure of 5 years, right? So मैं बार बार सुनती रहती थी different लोगों से, वो आके हमें कहते थे कि अभी तो कुछ भी नहीं है, बाहर निकलोगे तो पता लगेगा, ये तो सब बेकार है, बाहर निकलोगे तो पता लगेगा। ठीक है, बाहर निकल आए, but the major change that I felt was कि जब आप पढ़ रहे हो, मोस्टली चीजें तो अप्लाई हो रही हैं। साइट एनालिसिस सीखे, अभी भी साइट पे आप जाते हो, सबसे पहले आप नॉर्थ देखोगे, वही बेसिक टीचर जो आपकी टीचर्स ने चीज बताई है। केस स्टडीज कैसे स्टडी करनी है, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, कैडिंग, यू लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, राइट? सो दे आर प्रिपेयरिंग यू टू बिकम एन आर्किटेक्ट। बट एकदम से आप एक दिन सुबह उठे हो, योर फ्रेंड्स आर नॉट देयर, you cannot bunk the class with them and you cannot go and eat saver with them. You're completely isolated, right? And you're going to a completely new office 9 to 5, जिसमें आप बीच में बंक नहीं ले सकते। नए लोग, कोई आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, किसी का जीपी आपसे ज्यादा था, एक सडन प्रेशर, यू नो, आपके ऊपर एकदम से आगे। अच्छा, जो लड़के हैं, अब कमाना है क्योंकि शादी करनी है, और लड़कियां, अच्छा अब शादी करनी है, जॉब बाद में कर, सो a lot of things just come your way suddenly. But you जो completely, I'm sure I think एक subject in your 4th year होना चाहिए जिसके अंदर you know you're able to tell the students कि अच्छा बाहर निकल के ये होगा। But I think पढ़ाई is different, like you know you're taking a degree, and then work life is different. So I think you're bound to just understand. I think internships इसी पर्पस के लिए होती हैं, ताकि आप एक दफा देख कर आओ। लेकिन internships जब तक मैं था तब तक मैंडेटरी थी, फॉर्म्स होते थे and all that. अब मैंने देखा है अब तो इंटर्नशिप का भी ट्रेंड खत्म हो गया है। लाइक आप करो ना करो, इट्स योर कॉल। लाइक व्हाई? Shreya, I think this was in our time too. कुछ बच्चे होते थे, करते थे, who were very motivated, जैसे हम लोग अच्छा ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, टीचर से कांटेक्ट, उनसे आप कहते हैं हमें रख लें। सो वो आपकी अपनी ड्राइविंग फोर्स, जैसे आपने कहा ना व्हाट मोटिवेट्स यू। कुछ स्टूडेंट्स होते थे who were laid back, और अब जब मैं खुद पढ़ा रही हूँ ना, तो यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टूडेंट्स कि अच्छा कौन से दे वांट टू वर्क हार्ड, कौन से देयर लाइक ओके व्हाटएवर। बिल्कुल। सो आई थिंक एग्जैक्टली इंटर्नशिप्स भी तो हम समर्स में इसीलिए करते हैं ना कि वी गेट टू नो कि अच्छा हाउ द प्रैक्टिकल लाइफ इज गोइंग टू बी। उसके अंदर शायद हमें रादर देन वर्किंग विद, जैसे हम बड़े बड़े नाम देख लेते हैं आर्किटेक्ट्स, हम कहते हैं इनके साथ काम करना है, हमें एक समर लगाना चाहिए विद द लेमैन्स, बिकॉज़ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशंस कैसे डाल रही हैं घरों में, जो जैसे अब इनकी देसी टर्मिनोलॉजी में होता है मसाला लगाना है, वो क्या चीज़ होती है, बिकॉज़ इनिशियली यू डोंट नो एनी ऑफ दिस। सो अगर हम वो कर ले तो आई थिंक इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ लिटिल बेटर। बट ऑब्वियसली यू नो वन डे यू वेक अप, योर फ्रेंड्स आर नॉट देयर, ओके दैट्स द सैडेस्ट पार्ट। फॉर गर्ल्स, किसी की शादी हो रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मास्टर्स के लिए बाहर जा रहा है, सो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन इज हार्डर। तो पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं ना, जाओ नौकरी करो, घर क्यों बैठे हो। आई एम श्योर बॉयज पे ये प्रेशर होता है। नेहा, आपने बताया कि आप साथ साथ टीचिंग भी कर रही हैं, एनसीए पढ़ा रही हैं। टीचिंग एक बहुत, मुझे जो लगता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने जनरेशन को आप तैयार कर रहे हैं आने के लिए। जब हम टीचर थे, हमने भी नोटिस किया, स्टूडेंट्स करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं वो पुराने मेथड्स पे चल रहे होते हैं, कुछ नए नए इनोवेशंस लेकर आ रहे होते हैं। आप किस तरह से मेक श्योर करती हैं आने वाली जो जनरेशन है आप उसको फेमिलियराइज करें लेटेस्ट चीज़ों के साथ, और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स आप उनको करा दें? बिल्कुल शरिया, आई थिंक इसके अंदर एक बहुत मेजर चीज़ है जो हमें रियलाइज करने की जरूरत है। सो नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड ईयर स्टूडियो, डिज़ाइन स्टूडियो। यू नो डिज़ाइन स्टूडियो में हम मेन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, सीखते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। Whereas fourth year में I'm taking architecture seminar. So दोनों classes में there's a lot of difference. What difference? ठीक है, सेकेंड ईयर को मुझे फंडामेंटल फाउंडेशंस पढ़ाने, ठीक है, जो फाउंडेशन लर्निंग हमारी होती है, व्हाट इज साइट एनालिसिस, व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ड्राइंग्स कैसे बननी है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डायमेंशंस, यू सी लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, सो मेनी थिंग्स लाइक दिस बेसिक ये ना फाउंडेशन है। बट whereas when I go to my fourth year architecture seminar class, sometimes I'm not even prepared because I'm like अच्छा ठीक है, I'll give them a new topic this time. Someday I'm going to open this Metropolis. It's an old movie by Fritz Lang. It's an architectural context, उसमें बहुत ज़्यादा है, science fiction है, so कभी वो दिखा दूंगी. Sometimes I'm going to introduce them to a new sustainability or what is LEED or
newer ideas, or I'm going to call new generational architects, younger architects, to motivate them for their future, give them an idea कि अच्छा कौन सी अब हिस्ट्री तो पढ़ ली हमने, सारी हिस्ट्री की मूवमेंट्स तो देख ली. सो नाउ मूवमेंट्स विच आर हैपनिंग करंटली इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द वर्ल्ड गोइंग टुवर्ड्स. अच्छा दुनिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है आर्किटेक्चर का, किस तरह हम एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई रियली फोकस फॉर माई फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स. बट फॉर माई सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मुझे थोड़ा सा वो जो बेसिक्स थी ना उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, ऑब्वियसली विद मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, विद मॉडर्न एग्जाम्पल्स, विद मॉडर्न केस स्टडीज. बट आई थिंक वो सेकेंड ईयर आप, क्योंकि सेकेंड ईयर में देखो आप एक आ रहे हो फाउंडेशन ईयर करके, बेसिक्स करके, स्कल्पचर बनाना आ गया हमें डिजाइन प्रिंसिपल्स पता है, पर हमें आर्किटेक्चर अभी तक उस तरह नहीं आता. हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट डे पे शुरू, हमारे कॉलेज में है, बाकी यूजुअली कॉलेज में जो है ना वो आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है. बिकॉज़ व्हेन आई स्टार्टेड माय आर्किटेक्चर इन कॉम साथ, सो वी यूज्ड टू हैव अ क्लास. In fact, I think the curriculum has changed, because when I was in NCA, so हमारा first year में subject होता था architectonics. I don't think it's there anymore. हमारे yes. So उसके अंदर हम architectural फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे. But I think yeah, और वो drafting भी is basic drafting, perspective, right? So second year में आके अब आप बच्चे को फिर fundamental जो foundations हैं वो पढ़ाना शुरू करते हो. But I truly believe कि आगे साथ साथ लेके चलना जरूरी है, because when you go to other countries, then you actually see कि कितना fast paced architecture हो चुका है. लेकिन saying the same, अभी भी architectural pieces वही हैं जो history में हम पढ़ते हैं. ये तो है. You go to Europe, you'll not really be interested in seeing a new LEED certified building, but you'll be more interested in going and seeing Parthenon or anything like that. For example, ठीक है, आपको होगा मैं स्पेन चला जाऊँ, राइट, मैं सेग्राडा फेमिलिया देख लूँ, rather than going and seeing Hearst Tower, for example. वो तो हम आर्क डेली पे देख लेंगे. And they all pretty much look the same, right? So before moving on to our last question, I'm going to play a pick it quick round with you. Done. It's like a rapid fire. Okay. I'm going to ask a question, give you two options, you have to pick one quickly. ठीक है? Right. So question 1 is, you would want your children to study architecture too? A, of course, yes. B, oh, no. Oh, no. No. That's not happening. Not right? No. Okay. No. Number 2, on sites, would you rather keep a digital tablet or a sketchbook? Sketchbook. I'm a little slow with software, so yes, I would go with sketchbook. उसको चार्ज करके कौन लेके जाए? हाँ, मैं तो आज चोरी होने का भी डर. Exactly. 3, AI took over the world. You have to pick one profession from these two. A, zookeeper. B, museum manager. That's tricky. Zookeeper. Yeah. I'll get bored by the museum eventually. Number 4. Petrol prices are going insanely high. A, I want solar cars. B, I want a bike-friendly city. I want a bike-friendly city. Right. Yeah. Number 5. You have been offered same packages, one from a country abroad while one from here. A, I'll stay here. B, when am I flying? When am I flying? God, I'm guilty for that, but no, I want to fly. Number 6. You are their official architect. If given, which one will you design? A set for House of Dragon, a set for Marvel movies? Set of House of Dragons. Right. Yes. You have seen that. Yeah. Good. Not Marvel. Okay. Not at all. Last. You had a tiring week and it's Friday. A, I want a weekend out with my girlfriends. B, I want a weekend out with my husband and kids. I want a weekend out with my girlfriend. Enough of husband and kids. Thank you, no. Right. Okay, so last question, your views about Archistan. I am loving what you guys are doing. I think it's so important for architects like us who do not have so much of recognition right now to come here and express our feelings. And another thing that since I've been following you guys since forever, so हर episode में कोई नई चीज़ है. किसी के अंदर मुझे 3D rendering का पता लग रहा है, तो किसी के अंदर मुझे like recently Sidra was over, right? Yep. So मैं उनका उतना उससे it was about contextual learning, right? So it was so nice, and then everything is like very relatable to our field. So हमारे लिए options open हो रही हैं. And another very important thing that I noticed कि मैंने इतने लोगों को
अपनी डायरी में नोट डाउन किया कि अच्छा अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सो आई नो हू टू कॉन्टैक्ट. बिल्कुल ऐसे आई एम नॉट गोइंग टू गेट लाइक मुझे ख्वार नहीं होना पड़ेगा मार्केट में कि मैं किसको ढूंढूं. सो आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड आई एम सो ग्लैड यू गाइस कॉल्ड मी हियर. थैंक यू. सो गाइज आई होप आज का एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, स्पेशली वो लोग जो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि चीज़ों को बैलेंस किस तरह से करना है. नेहा ने काफ़ी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन की. Alright, just visit and join www.archistan.com. The registration is for free. And do not forget to subscribe to our social media platform that includes YouTube, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And if you want to be a part of our discussion series, if you want to get featured on Workstation, Vendors Time, or your project on Spaces, then direct message us or email us at info@archistan.com. Right, so we'll see you inshallah next week with a different guest and a different topic. Till then, Hafiz.